Devasis, which you have talked about, is that we wanted to discuss about low code. Low code touches a very interesting aspect which I am most passionate about. It is the Mm-hmm. aspect of democratization. So you might have Mm-hmm. heard about the big startups like Byju's and everything. They have these are educational startups. They are doing well business in these areas. But what they have not done enough is they have not democratized it enough. Still a significant revenue out there. Still you need to have certain kind of a privilege, a certain kind of a background, a certain and background can be anything, whether it can be technical, whether it can be social. Then only you can be considered well enough to join these kind of to avail these new era things. Okay, but Mm-hmm. why I'm fascinated with the world of digital transformation is that we are trying to break the boundaries. By boundaries, I mean to say it's no longer a catch that somebody who is a technical genius after spending 15 years, Mm-hmm. i- suddenly that person starts behaving like God, that nobody can touch him. Okay, he's the master genius, he knows everything, he can play it along his rules, his suggestion, his decision is entirely his. Okay, and suddenly you see his position being threatened by new age things like low code. What do you mean Mm-hmm. by low code? Low code seems sounds very funny, and have you not thought about it? कि लो कोड नो कोड ये क्या सब अजीब सा कांड आ गया है मतलब what is this? कुछ साल पहले there was something called as RPA, robotic process automation. आधे लोग तो कंफ्यूज हो जाते थे कि are we creating some physical robots who will do some automated tasks? So then everybody has to make everyone aware. But we are not doing creating robots. We're just automating some tasks which should have been automated way earlier. But it's just that we are focusing much more now and we are automating all the relevant streams. So this space, this field literally picked up like anything. And you are a pioneer. You are one of the earliest starters in this area. And I've seen you grow in this area in RPM. But the thing is Yes. that if I just give a brief introduction of low code, what area low code is trying to address? Okay. Mm-hmm. See, the thing is that RPA and other solutions are kind of trying to provide operational benefits to any organization who have just grown their IT backlog for quite a long time. They have huge IT debt. Okay, by IT data, I mean to say multiple of legacy systems where processes are being handled, and you cannot literally transform every one of them into modern ERP system. So literally taking the step of transforming each and every one of the system is going to be not only time consuming, but it will require a lot of moolahs. Now, Mm-hmm. when you require a lot of moolah, what do you do best? This is one of the problem area where solution was desperately needed. Yes, you can Mm-hmm. automate it. I understand that you can automate it, but automation gives you operational fix. It reduces your cost. It improves your instant customer satisfaction. But at some point of time, you might be thinking, some systems I have to modernize. Okay, Mm-hmm. so that is still a long game. And what about thing? Let's say you want to create a new system altogether. Suppose you want to design a new system. Mm. If you want to design a new system, certainly RP is ruled out. RP does not help you design a new system. Yeah. Okay. Mm-hmm. If you take traditional development approach, it will take its own sweet time, 6 months, 7 months, 8 months, so on and so forth. Exactly. Now, now here comes low code. Low code tells you, buddy, we will help you design the new system. Okay. Mm-hmm. And why the hell you are talking about 6 months? Yeah, 6 months is too long a time. Earthquake can come in, another COVID wave can come in. So why to wait for so long? You Mm-hmm. want a solution, you Exactly. want a quick fix solution, spend 2 months, spend 1 month, we'll give you a solution. You would be surprised to know most of the leading vaccine manufacturers in UK, when they were when the COVID was at its peak and they were trying to produce vaccine, they tried to simplify the processes. They wanted multiple applications to be developed.
Now the Mhm. problem is that if you try developing those systems from the scratch, even the planning and the implementation would have taken them 6 to 7 months. And Exactly. COVID Yeah. was literally killing people every other day. You cannot wait for 6 to 7 months to do that. So the good catch is that what these vaccine manufacturers did, they decided to simplify their existing system or develop new systems using low code. Okay. So, I I mean, have some questions, like if you can put some light for the viewers as well. First of all, see, you have literally, paved the path of low code entire end-to-end solutions. Now, I wanted to start from, let's say, if somebody who don't know what exactly low code is. So mhm. how do I introduce that? Okay, because what would be the right definition? That is first point I wanted to know. In a simplest way, how can we present it? Can we even simplified it in a way that we can, in one word we can describe? That is one question. And Yeah, second is, what is the the name, range? What kind of solutions is coming under low code? Like, okay, when I say low code, I know from yeah, RPA point the of name view. itself Yeah, simplifies it. yeah. Yeah, brilliant question, so Devasis. And I'll not give you a technical jargon related question because you have asked a very interesting question. The name itself says, what does it mean? Low code. So it Mm-hmm, means a system where the code will be at minimum. Okay. So the code will be at minimum, but does the code goes away? No, code will still be there, but it will be minimum. Okay. Now there is other term also called as no code. There they promise that there will be no code. You okay. can just do away with the code. Okay, so what does it mean? So most of the people say, what does it mean actually? So let's say if I have to design a new system, don't we have to write logic? Logic is being translated into digital binary, and that's what we call as code. This is the way Mm-hmm, machine reads it. If you are trying to build any logic into any system, you have to provide a logic to the system because machine has not developed so much intelligence that they can understand any processes. So you have to write a code which gets converted into digital binary. That's a old age 2000 era of explaining. But what if I tell them whatever is the actual code, whether you are a traditional Java expert or a .NET expert, that is the base of the platform. So you're writing in the platform or you are doing creating flowcharts in the platform. Okay, at the background of it, an automated code gets generated or code gets compiled. Okay, you don't mm-hmm. have to be bothered around it. System takes care of it. Okay, so let me try and give you an example. For example, let's suppose say, what is the key aspect of developing any application? It will have a front end, it will have a back end. Front end is something, front end is what we call as a screen which will be shown to the end users. Back end is something where the content of the screen will be stored. Okay, so for Mm-hmm. example, front end is any website. Any website you can call is a front end, which is visible to any particular people who can see Mm-hmm. it. Backend is the body, or you can say heart of that particular application, where entire stuff is being stored. Where Exactly. Mm-hmm. those whosoever is familiar with IT, they know backend is also referred as database, where they will have tables, there will be a columns, there will be rules, how the data will be accessed from multiple tables. For example, I prefer to give a very simple example. Let's Mm-hmm. suppose say you have to display the salary of all the employees who are working in an organization. So there will Mm-hmm. be table of employees in the system, there will be table of salary in the system. You apply some logic connecting these two tables, and that's the way you display the data. So what do Yeah. you mean? You need to create a database. That's the first element. Now if I tell you in this particular platform or any other low code platform, you get a section, a visual section called as data. Okay, Mm-hmm. Mm-hmm. so what does it mean? And you also get a visual section called as process logic interface. Mm-hmm. Interface is for designing visual front end interface, and data is for the back end interface. Generally, Okay. you might have heard a term they was is called as full stack developer. So, full stack Exactly. Yeah. developer is Yeah. someone who knows everything, front end, Mm, back end, he can do everything. Okay, mm, mm.
What if I tell you a platform developer or any low code developer has to know everything, because he Mm-hmm. cannot say I will focus only on the front end part, I will focus only on the UI part, I will not touch the data part. You will have to see through everything. Okay, Correct. so that's the Yeah. fun part of it. Okay, I hope so. I'm kind of going into Yeah. You. rhyming mode, so I don't want to touch base upon that, but I just want to address your question in a very simple terms. Yeah. Low code definition is hidden in the word low and code. There will be Itself. minimal, Yeah. yeah, there will be minimal code. You will be doing all things which you do in traditional application development, but you will do it visually through a form of a flow chart, which will not require you to learn syntax like anything else. Are there syntaxes associated with these platforms? Yes. Uh, but you don't have to be master of those syntax. You can just learn it on the go, and you can literally start creating flowcharts. It gets converted into programming, and you can produce output just like anything. Okay. So Mm. it customizes the development in a way that, if suppose, let's say I have to produce, I have to create a, let's say, what do you call it, vaccine manufacturer website, railway website, e-commerce website, I can Exactly. do it within a day, I can do within weeks. Okay, the traditional approach would have taken lots of time, but here I can do it within weeks. So that's the beauty of it. Okay, so that's the Awesome. thing which I wanted to tell you. बेसिक लाइक ओके सी मेरे को तो आइडिया है सिंस आई एम वर्किंग ऑन दिस अगर मैं ऐसा करके पूछूं आपसे कि चलिए ठीक है मैं लो कोड में अगर काम कर रहा हूं ठीक है आप एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूं और डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूं एडवांटेज क्या है ओके देखो, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं टच करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन हाँ का क्या फैक्टर होता है। हम्म कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स सपोज से, मैं आईटी ऑर्गेनाइजेशन का बात नहीं करूँ, आईटी हम्म तो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। हम्म मैं एक टिपिकल जो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर देता हूँ, जिनके मतलब कि एक्चुअली प्रोडक्ट्स है, या फिर जो सर्विसेज एंड कस्टमर को देती है, जैसे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ लो, फूड इंडस्ट्री पकड़ लो, हम्म टेलीकॉम इंडस्ट्री पकड़ लो, कार मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पकड़ लो, ठीक एग्जैक्ट है। ओके उनका फोकस एरिया क्या होता है? उनका फोकस एरिया होता है कि मेरे को अपना जो प्रोडक्ट है, जो कि की डिफरेंशिएटर है, जैसे एक हार्ले डेविडसन वालों का फोकस होना चाहिए कि मेरी बाइक अच्छी बने, एग्जैक्टली ठीक है। हम्म उसका ये फोकस नहीं होना चाहिए कि मेरे आईटी एप्लीकेशन जो है, जो कि मेरे वेंडर, सप्लायर और सबको कनेक्ट करता है ताकि हम पूरा ट्रैक कर सके, हम्म वो बहुत अच्छे बने। वो उसका फोकस नहीं है। लेट्स सपोज से, तो उसके लिए वो सिस्टम बनाता है। नाउ द सिस्टम विच दीज गाइस क्रिएट, जनरली इट्स अ बिग सिस्टम। ईआरपी होता है, विच इज ट्रेडिशनल ईआरपी। वो बहुत बड़ा सिस्टम होता है, ठीक है। हम्म नाउ लेट्स सपोज से उस सिस्टम में कुछ ऐड करना है। लेट्स सपोज से, लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हार्ले डेविडसन को एक सिंपल सा वेबसाइट बनाना है, बहुत सिंपल सा वेबसाइट बनाना है ओके कि जो हम ट्रैवल, जो हर कंट्री है, हर कंट्री में मेरा किस महीने सेल्स पीक करता है, किस महीने सेल पीक नहीं करता है, ठीक है। हम्म और और मतलब इसमें एक हो गया सेल्स पीक करता है तो, और किस टाइप के कस्टमर जाते हैं वहां पे, ओके ठीक है। और सेल्स डेटा भी चाहिए, और कुछ उसको डायग्राम चाहिए जिससे एनालिसिस कर सके, वो चीज कर सके। उसके लिए उसको करना पड़ेगा, अरे एसएपी में क्या फैसिलिटी होता है, उसमें एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, and it will take a lot of effort where you he will have to करेक्ट do all kinds of research, ठीक है। but he goes to a low code partner, he says this is my requirement, low code partner बोला कि okay, let me give it to you requirement handy, एक वीक का हमें बिजनेस एनालिसिस चाहिए, डॉक्यूमेंट करूंगा मैं रिक्वायरमेंट, 3 सप्ताह, वॉयला, विल गिव यू द वेबसाइट, दैट्स इट, awesome डन। awesome ओके, great yeah वेबसाइट डन, exactly अच्छे अच्छे इमेज से बता। अब हम्म हार्ले डेविडसन अपने वेबसाइट पे जा रहा है, उस लिंक पे जा रहा है, he wants हम्म to see हम्म what is the India sales, very good. Okay, which region is performing best, he can see that. He can see the graphical analysis, yes, he can go to the dashboard menu, he can see the graphical analysis. He wants to do some processing, let's suppose say
वो इंडिया में मल्टीपल डीलरशिप है, एक डीलरशिप को बोलना चाहता है कि ये तुम्हारा फाइनेंशियल टारगेट है, Hmm. उस Hmm. सिस्टम Hmm. फाइनेंशियल टारगेट दे सकता है, और डीलर को एक ऑटोमेटेड मेल चला जाएगा, या डीलर कैन आल्सो गेट एक्सेस ऑन द वेबसाइट एंड कैन चेक इट, ओके मेरा ये फाइनेंशियल टारगेट है। डीलर ने वो टारगेट बना लिया तो वो सिंपली अपलोड कर देगा अपने सिस्टम पे, और somebody at the central office of Harley Davidson can see it कि मेरा चीजें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब यानी ये वेरी अगर स्मॉल चीज है, it's like ये स्मॉल चीज it है। boosts the speed, right? And इट as well as it इट does not comply or compromise with the quality of the application which we developed. On top yes, of it, as per my observation, that it can be integrated. So imagine there are some lack or there are some loopholes which is not writable, मतलब achieve नहीं कर सकते given the constraint of the functionality of that particular platform. So we have functionality where the low code comes into picture, that it can be integrated and also embedded into it, so that it makes a complete kind of a solution, right? How do you exactly. see that, right? Is that an Yeah, advantage? exactly. Let me try and give you exactly. Let me try and give you a very simple example. I've been talking about ERP system. Let's say SAP. Okay. Yeah. Or there are many companies these days, they prefer to have an SAP system, have an ERP system. I should not use the SAP system. SAP is not the only ERP. There are Hmm. multiple ERP application, but the beauty of the ERP application has been created to handle a specific function area in a very best manner. It's a kind of a COTS product. Okay, where let's say if you want to customize, build a financial model for you, you will go to SAP FICO, you can create a financial model. Similarly, in utilities, if you want to set up the electricity retail sector, there is a SAP module for utilities. Okay. But let's suppose say the basis you have been in this industry. Suppose I want to build a new customize a new module in SAP, or build Hmm. a new module in SAP. Hmm. What are the things Hmm. you will need an SAP developer. Okay, you Exactly. need a good SAP developer. Hmm. You will need an SAP business analyst. Okay, Exactly. and there will be I cost would. associated with it. SAP business developer, SAP business analyst doesn't come cheap. They are in demand, isn't it? Mm. Yeah. So they will not come cheap. But what if I tell you कि जो the requirements which you have, I can build it using low code system, but for data interchange, data exchange, data which I have to get from SAP, my platform provides a way so that I can get the access the data from the SAP either in real time, mark my words, either in real time or in a Hmm. batch way. Okay. Hmm. Let me try and give you a very simple example. Uh, Imagine there is an SAP employee module which contains all the employee related information, employee name, employee salary, and whosoever joins in, they are being onboarded on that particular module. But you Hmm. want to create a SAP performance management, a performance management model for an assessment, performance assessment of employee, or he has to get confirmed. Okay, that's the case. But suppose say if you are on the mood that you want to build the performance management, or let's say confirmation process on SAP, as I go back to my further point, you will have to get a SAP business analyst who will do the analysis. You will have to get a SAP developer who will do it. What if I create a system of performance management in 3 weeks and integrate it with SAP? Okay, how will I integrate it with Exactly. SAP? Most of the Hmm. low-code platforms provide something called as API Integrator connection. or API connection, API, integrator, add-ons, lot of things are there. बहुत सारा चीज रहता API है हाँ. connection and custom connector. Custom connector क्या होता है कि for example there are any ERP application there is custom connector which many low-code platform provide. कि by default it access the SAP body and it can access the data which is present in SAP in a particular module. It takes the access. That's the custom connector which they develop. Suppose it's not a major ERP platform, but it's a simple application which can which has an API. Which let's suppose say it's a simple application which can be wrapped into under an API. API, you I hope so the audience understand. It's an Hmm. application programming interface. Correct. Okay. So if any system can be wrapped under an API, okay, any low code platform
will provide something called as reverse proxy or API gateway through which we can connect, call that API of that particular system. So we can not only consume the services by calling that API, but we can also expose our services. So now let's suppose say SAP wants to extract process data from our application. SAP can also do that. Okay. Mm-hmm. We Mm-hmm. want to extract some data from SAP. We can also do that. Okay. So it works both ways. Okay. So Awesome. that's the beauty of it. Vice versa, right? And I'm curious to know, like, in terms of demand. Okay, so how do you convince a this is a typical, okay, I will say that it's a typical challenge of convincing that how the clients see a low code platform versus a traditional approach, and what is the like key pointers we can go and tell client that this is how it will actually generate values for you. I know one is of course speed. In other way, it is like advantage also. But what kind of challenges you see, or what kind of skeptic view you observe in the market today? But and on what is your point on those observation based on your experience on the ground? That is a Yeah, kind of. that's a very brilliant question. First of all, the first point which I'll have, which we started with it, remember the word speed. Mhm. Speed and quality are two important words which you can associate it with any low code platform. You can deliver the quality with speed. Okay. That's the beauty of any low code platform. Okay. Now, why will an organization invest in it? See, you might have heard about organization taking an IT strategy, developing an IT application, but after 6 months of work, they suddenly realized that, man, this will take hell lot of time. Okay, I do not have enough time. What if I go ahead and tell the organization, boss, if you want to even fail on your approach, why don't you want to fail after 2 months? Why are you waiting for 6 months to decide that this approach is not working for you? Is So a awesome. low Yeah. code can provide you an approach so that you can fail quickly, Mm. you can build quickly, you can pass quickly, and you can Mhm. realize your return quickly. सो हर कंपनी को तो पैसे चाहिए नहीं यार, मैं कोई भी सिस्टम पे लगाता हूँ, बेनिफिट्स कब से आएंगे, पैसे कब से मिलेंगे, रिटर्न ऑन Exactly. इन्वेस्टमेंट कब से आएंगे? और वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको स्पीड तो चाहिए ही चाहिए। तो स्पीड के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं? नहीं, वैसे तो मैंने कहा ही नहीं, क्वालिटी नहीं करते हैं। तो आप लोग सब बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिर क्या सब चीज़ हम लो कोड में डेवलप कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि वी आई एम सेइंग कि सिर्फ लो कोड ही करो और ट्रेडिशनल कोड नहीं करो। What I would suggest is that there should be a approach. There should be a concern. There should be many questions which has to be validated before you actually start with the low code. But one of the Mhm. very basic question is that if it's a non-critical system or a medium critical system, okay, Mhm. Mhm. not handling millions of data per day. Data is in thousands or 1,000 or 2,000s of data per day, then why do you need to go for the traditional programming? I think implement simply a low code solution in 2 to 3 months and deliver the output. That's the beauty of it. Okay. Exactly. I love the approach, fail fast, fail sooner, because a company, spend a lot of time in order to identify even the failures, and it costs a lot of effort, of course, and not only that, sometimes we lose deals as well on top of it, because the sooner we can create a prototype for a client, we can literally like demonstrate the power and opportunity which we can tap with this kind of solutions, right? So and it speeds up that creation of that POC, and overall क्या करता है, ये speed up कर देता है मेरा। और थोड़ा सा different type का question है, दिस इज फॉर, आपने बताया अभी लो कोड क्या है, हमने डिस्कस करा, आपने बताया कि ये कैसे हेल्प कर रहा है, डेफिनेशन आपने उसको टच करा, एंड एडवांटेज क्या है कॉर्पोरेट के लिए वो आपने हाईलाइट करा। सो इमेजिन आई एम ए लेमैन, ठीक है, एक डेवलपर हूँ मैं, नॉर्मली एक प्लेटफॉर्म में डेवलप करता हूँ, तो आपका क्या सजेशन रहेगा बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री लैंडस्केप टुडे, कि किस तरह का डिमांड गोइंग फॉरवर्ड आने वाला है लो कोड में, But और कौन सा मस्त है प्लेटफॉर्म आपको आप रेकमेंड करते हैं, मतलब इट कुड बी, मतलब वर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, उसमें से आप क्या रेकमेंड करते हैं कि देखो दीज टू टेक्नोलॉजीज, इस टू टेक्नोलॉजीज में लो कोड इज रियली डिमांडेबल इन अपकमिंग फ्यूचर,
एंड और एक इसमें कैवियट वाला क्वेश्चन था कि डू यू सी, बिकॉज आई सी क्लाउड इज ईटिंग ऑल दिस platform itself. Now, how you see low code versus cloud, or low code is getting merged with cloud in going forward? I have And no idea, but that's a brilliant question. So I'll start with the first question. I think the third question was low code with cloud. Prior to that, yours was I kind of missed that. yeah, like what are the platform, like which verticals of low code? So it's Okay, analytical low code and you were or asking, UI? and you were Yeah, asking about the landscape. landscape, So right? tell you, so pata hai, generally everybody in this world is might be interested in what Gartner is thinking. Mm-hmm, So what mm-hmm. Gartner is thinking 65% of application by 2024 will be built using low code. Yeah. Some of the market vendors are more promising. They are saying 80% of the applications by 2024 will be built using low code. So you can gauge the potential. Okay. Okay. 80% of the Hmm. application going to be built in the market by 2024 is going to be low code. ठीक है. अब तुमने बात किया कि किस टाइप के प्लेटफॉर्म है इस एरिया में, तो हाँ, मैं इसमें किस तरह बताता का हूँ प्लेटफॉर्म कि है, डिमांड हाँ ज्यादा ये है या तो फ्यूचरिस्टिक yes, आप प्रेडिक्शन कर रहे हो? हाँ तो ये तो मैंने पहले तुम्हें डेटा का दिया. नाउ अब मैं बताता हूँ कि क्या है ये एरिया. लोगो को मैं टू कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा, वर्टिकलाइज्ड ऑफरिंग और हॉरिजॉन्टल ऑफरिंग. हाँ. हॉरिजॉन्टल मतलब अक्रॉस द बोर्ड कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी इंडस्ट्री में लगा सकते हो. वर्टिकलाइज्ड इंडस्ट्री स्पेसिफिक लो कोड सॉल्यूशन हो गया. ठीक है. अब वर्टिकलाइज्ड में बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज बताता हूँ हम्म. देवशीष. ओके. लास्ट ईयर्स में कुछ सालों में तुमने वर्ड बहुत ग्लोरिफाइड सुना होगा, डेटा साइंटिस्ट. एग्जैक्टली, डेटा यस. साइंस. डेटा यार साइंस. डेटा साइंटिस्ट कर लो यार, बंदे बड़े डिमांड में हैं. ठीक है. हम्म. या ठीक आई है, एग्री. तो वो एक प्रिविलेज सेटिंग दे रहा था. ठीक है. हम्म. डेटा साइंटिस्ट करने में इन्वेस्टमेंट चाहिए, दो आई अप्रिशिएट द फील्ड बिकॉज this field actually helps you get back to the basics of learning maths and something which I very much appreciate, which was missing from the programming for quite a long time. So that's why I appreciate that field. But उसमें time चाहिए, investment चाहिए. A person who is starting well in the industry may have come from a humble background. He may not have the enough resources to do a data science course and then try out to become a data scientist. He cannot do that. Okay. एग्जैक्टली, या. बट मैं क्यों डेटा साइंस पे टच कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आऊंगा. क्योंकि हाँ. व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट वर्टिकलाइज्ड ऑफरिंग, अगर मैं वर्टिकलाइज. तुम्हें बताऊं, हाँ, अगर मैं तुम्हें बताऊं, अमेजन और गूगल एक लो कोड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसके बैकबोन में डेटा साइंस होगा. तो आपको थोड़ा बहुत डेटा साइंस का जानते होगे, आप फ्लो चार्ट, आप उनके प्लेटफॉर्म सीख लो. आपको फुल फ्लेजेड डेटा साइंस सीखने की जरूरत नहीं है. तो आप इक्वली गुड डेटा साइंस एल्गोरिदम्स, डेटा साइंस मॉडल, डेटा मॉडल क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दोज प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर बीइंग बिल्ट बाय अमेजन, गूगल, एंड दे आर गोइंग टू प्रमोट इट. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल, जो हम्म. कि हम्म. हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म्स कट अक्रॉस द बोर्ड चल रहे हैं. तो हम्म. उसमें द प्लेटफॉर्म विच आई एम वेरी मच इन्वेस्टेड इन इज, और आई लाइक इट वेरी मच, इज आउट सिस्टम्स. हम्म. ओके. The reason for promoting OutSystem, I would not say I'm promoting OutSystem, but I thought that this platform provides you enough flexibility. Okay. See, this platform itself is humble and democratic in approach. Okay. I will ओके. not name other platforms, but what I'll say that in most of the low code platforms, there is a case of getting tied up. Tied, do you understand tied up, Debasis? टार्ड अप मींस लेट्स सपोज से यार कि यो तुमने एसएपी पे कुछ बनाया, या फिर हम्म. तुमने लेट्स से कोई कॉट्स प्लेटफॉर्म ले लिया, तुमने एक मार्केट से एक प्रोडक्ट खरीद लिया और तुमने उस पर कुछ बनाया. अब क्या करो, मान लो तुमको 2 साल के बाद रियलाइज हो रहा है कि यह प्रोडक्ट हमको नहीं चाहिए यार, हमको बेचना है. तो वो जितना प्रोग्रामिंग किया, क्या तुमको वो उसका सोर्स कोड दे देंगे कि जो तुम किसी भी सिस्टम पे डिप्लॉय कर सकते हो? सिंपल नो. क्वेश्चन. नो. नो. वो देंगे? नहीं देंगे. नहीं देखें. अब मैं तुम्हें खूबसूरती बताता हूँ लो आउट सिस्टम्स की. दिस इज हम्म. नॉट ट्रू विथ लो कोड प्लेटफॉर्म. अगर तुम आउट सिस्टम पे 1-2 साल काम किए हो, उनके साथ पार्टनरशिप अच्छी है, तो वो 2 साल के बाद क्या करेंगे तुम्हें? अगर तुम वर्कआउट करना चाहते हो तो वो तुमको सोर्स कोड जनरेट कर देंगे. ठीक है.
जो तुम किसी भी एएसपी के एएसपी डॉट नेट के इन्वायरमेंट के साथ कंपैटिबल करा सकते हो, उस पर कोड कर सकते हो। इट कैन बी कंपाइल्ड इन एनी इन्वायरमेंट, एनी ट्रेडिशनल कोड इन्वायरमेंट। तो वो आप सोर्स कोड डायरेक्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्ट कंपाइल कर सकते हो, आपको मिनिमल चेंज लगेगी ये करने के लिए। आउट सिस्टम ऐसा क्यों कह रहा है? Because our system is confident of its product features. Our system Hmm. believes that when you will get into the platform, you will not want to move it. And I have seen it. The more you are stuck, addicted to this platform, the more you would want to score above that. So they are not bothered about कि यार मुझे तो चाहिए कि मैं लॉक इन कर दूं, प्लेटफॉर्म लॉक इन कर दूं। Hmm. वो कॉन्फिडेंस है कि यार हमारे प्लेटफॉर्म ही इतना अच्छा बना है कि सब लोग ले लेंगे। ठीक है, मैं जनरली किसी प्लेटफॉर्म के बारे में गागा नहीं होता, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म Hmm. एट इट्स रूट्स इज वेरी हम्बल। ओके, कॉस्टिंग प्राइसिंग दैट्स अनदर फीचर्स वेयर डिस्कशन डिफरेंट वे में जाता है, बट द थिंग इज दैट व्हाट प्लेटफॉर्म इज करेंटली डूइंग is trying to make sure that and for an organization this does not become a strategy which they decide to regret it at a later point of time. Okay, even Awesome. if they Hmm. have invested in out system, after 2 years if they want to move away, आउट सिस्टम बोलेगा नहीं अब तुमने ले लिया तो तुम्हें मेरे साथ टिकना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, Hmm. You तो can change or switch कस्टमर, anytime. हाँ मतलब कि उसको आप किसी ट्रेडिशनल लो कोड प्लेटफॉर्म में सॉरी ट्रेडिशनल हार्ड कोड, अपॉलॉजीज, Hmm. ट्रेडिशनल हार्ड कोड प्लेटफॉर्म में कंपाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये Yeah. होता है आउट सिस्टम का प्रॉपर्टी। बट ऐसा नहीं है कि अदर प्लेटफॉर्म्स अच्छे नहीं है, अदर प्लेटफॉर्म्स भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एंड दे आर काइंड ऑफ राइजिंग अप, दे आर काइंड ऑफ इंक्रीजिंग इट्स रीच। तो मेरा कहना है कि गेट इनटू दिस एरिया। जैसे लो आरपीए था ना, स्पेशलाइज हो जाता था। नथिंग अगेंस्ट आरपीए, आरपीए बहुत ग्रोथ किया और आगे भी ग्रोथ करेगा बिकॉज आरपीए अब इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और अब हाइपर ऑटोमेशन हो गया, अब उसमें मशीन लर्निंग एआई आ गया है। तो डेमोक्रेटाइजेशन नहीं रहा है, वो प्रिविलेज्ड स्किल बन जा रहा है, मतलब कि शार्पेंड स्किल्स बन रहा है। उसमें भी फास्टर डिप्लॉयमेंट है, स्पीड उसमें भी है, कस्टमर चाहता है आरपीए। ठीक है, बट लो कोड जो है, लो कोड इज समथिंग at at right now is trying to democratize things. Okay, Hmm. and Hmm. democratization, और मैं कभी कभी एक ठेठ इंग्लिश में बोलूं Hmm. तो ये रिवर्स टेक्नोलॉजिकल जेंट्रिफिकेशन कर रहा है। मतलब क्या होता है इसका? टेक्नोलॉजिकल जेंट्रिफिकेशन बैड होता है, जेंट्रिफिकेशन बैड होता है मतलब कि कभी सुनते हो ना, अमीर लोग बड़ी जगह रहते हैं, गरीब लोग झोपड़ियों में रहते हैं, सोसाइटी ऐसे जेंट्रिफाइड हो जाती है। Hmm. 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 लेकिन रिवर्स कर दो अगर टेक्नोलॉजी जेंट्रिफिकेशन को, मतलब कि सबके पास इक्वल फैसिलिटी है, सोशलिज्म ड्रिवन वर्ल्ड है, Hmm. तो ये लोग यही कह रहा है, ये कह रहा है कि यार टेक्नोलॉजी सीखो, लर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, बट अपने आप को टाई अप मत कर लो। ठीक है, सीखने के लिए Two दुनिया बहुत one. ज्यादा है। Yeah. अगर आप 25 के हो तो आप 30 साल तक बहुत चीज सीख सकते हो। वाई डू वांट टू स्पेंड योर एंटायर लाइफ इन लर्निंग वन टेक्नोलॉजी? Exactly. सीखने के लिए बहुत चीज है, आसमान पड़ा है। हम तो सोलर सिस्टम में कीटाणु ऐसे हैं, तो जितना ज्यादा नॉलेज बटोरो Hmm. उतना ज्यादा अच्छा है। वाई टू गेट टायर्ड अप एंड बोस्ट अबाउट राइटिंग इन योर प्रोफाइल कि ये एरिया डेवलपर, दिस एरिया डेवलपर, रादर देन say that ki I'm a learner who learns everything in a new year. This year I'll be this kind of a learner. This year I'll be this kind of a learner. So low code is kind of an enabler in that area. Democratize things, gives you quick learning, gives an organization chance to implement quickly. Rather, what I've said it earlier, it gives organization chance to fail fast, do good, and produce good output. So that's the beauty of it. Okay, the future is very very bright. As I said it, कि there is a vertical skill. Vertical में भी आप develop कर सकते हो, horizontal में भी। Horizontal में multiple platforms है, like I've named about out systems because I was much more fascinated about out systems. But it's not that कि other platforms नहीं है, Mendix है, there are many other platforms. Then उसी तरह no code है, no code में आपका platforms like गूगल पावर एप्स है एंड समथिंग लाइक दैट है। एक और क्वेश्चन आता है लोगों के माइंड में कि यूएक्स कैसे होते हैं एप्लीकेशन के। यूएक्स भी यार
Sorry, yaar. The Mhm. environment is kind of hitting me. So UX भी आज के डेट में बड़ा अच्छा प्रोड्यूस करने लग गए हैं these low code platforms. So you can see ये प्लेटफॉर्म रखे ना आप सब कुछ बन जाओगे. You will become a UX designer, you will become developer, you will become a front end developer, you will you will become a back end developer. So actually this gives you an area where you can develop your skills throughout. So that's the beauty of this particular platform. ऑसम ऑसम। मैं आपसे बात करते समय मैं नोट कर रहा था कि देखिए मैं भी बहुत सारा लो कोड ऐसे प्लेटफॉर्म ऑब्जर्व करा हूँ विच इज रियली रियली लाइक यू नो अवेलेबल। ये ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन ये और इवॉल्व करेगा। फॉर एग्जांपल AWS गूगल का मेरे को पता है ऑलरेडी AI ML प्लेटफॉर्म है, जैसे ML ऑप्स हो गया, फिर उनका हो गया सेज मेकर हो गया, AWS का है। Yes. फिर सो दीज एक्चुअली एंड बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडिंग एंड जैसे AWS का नहीं, आपका एजोर का है, आपका AI ML का डेडिकेटेड एक पैकेज ही है उनका, मतलब प्लेटफॉर्म ही है जहां आप आई थिंक सम लैब, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, बट इट इज अवेलेबल। सो ऑलरेडी ये स्टार्ट हो गया उस साइड में। एंड दीज आर नथिंग बट लो कोड इटसेल्फ, बिकॉज वो कुछ कोई आपको इट्स लाइक आई वाज लिटरली सरप्राइज, वो AWS नहीं एज्योर में द प्लेटफॉर्म विच इज अवेलेबल, आई कैन लिटरली ड्रैग एंड ड्रॉप, और जो मैं पूरा एक लाइफ साइकिल वाया मैं टिपिकल कोडिंग में करता हूँ वो सारा कुछ अवेलेबल है और डायरेक्टली मैं कर पा रहा हूँ। दैट इज वन। नदर इज आउट सिस्टम, आपने बोला इस कैटेगरी में मैंने अदर टू टूल ऑब्जर्व करा है। एक आउट सिस्टम आपने बोला, आई वर्कड ऑन मैंड्रिक्स, एंड नदर इज क्विक बेस। सो ऑफ कोर्स हर एक मतलब स्टैक में ना देर आर वन ऑफ द बेस्ट टूल्स, एंड कुछ कुछ उनको कॉम्पीट करते रहते हैं। तो दीज आर आई कैन कपल ऑफ देम आई कैन नेम ऑफ। और एक टूल आया मेरे दिमाग में, वो है डेटा साइंस के ऊपर है, विच इज डेटा रोबोट। इट्स लाइक ए Yeah. एमलगमेशन ऑफ RPA वर्सेस डेटा साइंस अप्रोच, राइट? डेटा यार रोबोट। मैं तो तुम्हें उसमें इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। मैं अपने लिंक्डइन पे ब्लॉग्स लिखता हूँ, तो मेरे लिंक्डइन पे ब्लॉग रेफर कर देना ऑडियंस को, मेरे नाम दीपांशु से कैसे पढ़ सकते हैं। श्योर श्योर। देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। वो तो चलो हमने बात कर दिया डेटा साइंस का, सॉफ्टवेयर का। अब बात करूं, वो जो कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली टिपिकल रोबोट्स बनाती है। ठीक है, तो उनका जो बैकएंड सिस्टम है और टिपिकल एक्सपर्टाइज वाले सिस्टम है, वो लो कोड से उन्होंने डेवलप किया है। लो कोड से दैट रोबोट की आर्म कर रहे हैं। सो वो स्पेसिफिक कस्टम सॉल्यूशन है फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। दे आर बिल्ट इन यूजिंग लो कोड। अगर उस इंडस्ट्री में आपको रीच आउट करना है, सो देयर आर इनफ केसेस फॉर दैट। सो आई मैं कुछ महीनों से काफी लिख रहा हूँ लो कोड के बारे में। ठीक है, मेरा इंटेंट ये है कि लोगों को बताना कि देखो टेक्निकल में टाइम स्पेंड करो, बिकॉज टेक्निकल स्किल्स take you to the next level. If you are not a good programmer, you can never say कि you can solve problems. Okay, but programming का जो step है कि you learn in years. Okay, I would say कि if you start putting into practical whatever you are learning, you get more chance to learn. Okay, so एग्जैक्टली। low code is kind of converting theory into practice in a very short frame of time. Okay, but ऑफ it कोर्स। doesn't stop you from learning. So if you can start learning here, there is a world apart where you can do it. It does not make you lazy. And what it does not give you, it does not put you at a pedestal. By pedestal, I mean to say, it will not ask you कि अरे भैया you are learner of this technology, तब तो your demand is something else. Okay, our systems folks are also creating demand for them. Demand will come for every one of them, एग्जैक्टली। but the thing is that to achieve a certain level in any particular technology, be it Java, .NET, requires hours and hours of effort, years and years of experience. You cannot gain that unless you get experience working in that platform. Same thing goes with low code, but the learning time frame is very less. Okay, so you can say that ऑसम। if I want to climb a Mount Everest, I will go the traditional route. It is much more interesting. Trust me, it's much more interesting to go by the traditional route. You will require effort, you will require months of preparation. But suppose I know the right path, okay, where I know right support system, which can directly take me to the Everest.
Okay, though I may Exactly. miss on some parts of the adventure, Mm, but at the thing of the day, I will still be able to get to reach Everest. How many folks reach Everest? Very few of mm, them. very few. Okay. So if I can cut down some of the adventure, let's say 50 to 60% of the adventure, and still be able to access or see 40% of the adventure and achieve the final goal, then I will prefer the second option. But maybe Of once course. I've climbed Everest, then I can climb other mountains in Nepal, maybe Annapurna, maybe some other mountain. Okay. But I Mhm. get to chance explore more. But I'm not taking away from those folks who literally do mountain climbing every year, 3 to 4 mountains. Those are genius. But not everybody has that much resources. So Exactly. this is something like that. So it would be weird into Very different nice. area. But what I'm trying to say is that take this not as a dry out word. Whenever you talk about low code, talk in terms of a strategy. What organization is trying to achieve? What is the problem statement? Okay. And if you get hold of the problem statement, that solves your purpose. Awesome, awesome, awesome. I think we touch base a lot of topic itself. On the closure note, I have one question that, like, see, we definitely, I would like to have a follow-up conversation on low code and touch base a particular area, let's say out system. What is the entire approach for them and use cases? Couple of use cases, if we can discuss, would be really helpful. And similarly, I will brought up with some use cases on data science low code or business intelligence low code, which is Silonius, a similar kind of tool, because those are also in a low code. It is giving really, really good insight because initially what we used to happen, I am just sharing my experience in transformation. What happened before we embark any journey of transformation, we used to manually validating all these steps, उसको फिर validate करना, data इकट्ठा करना, ये एक humongous task है itself. And with this kind of process mining tool, right away I can in front of, I can see what is going on the visualization. I can see how the flow is going and where the problem is, and I just need to Exactly. pull out the process owner or SME of that particular area and discuss why it is going there, put a solution. It is much fast. The faster I am able Yeah, to identify, faster I can resolve the problem, or at exactly. least So, towards the problem solving we can go. and Yeah. Devasis, if I know you well, Mhm. you want to acquire as much knowledge as possible. Now Exactly. imagine if you learn these technical skills quickly, Mhm. it also frees up your time to learn more about the industry. You have given the brilliant example of process mining tool. If you can use the process mining tool effectively, you will not only learn about the process, but you can learn it quickly. Exactly. Okay, the And other aspect is that you can yeah, learn about that industry also quickly. Otherwise, if you exactly. just go ahead, see, you might have seen the privilege in any IT company. Hey, I'm an insurance expert, I'm a utilities expert, and something like that. Mm, But can you also become the expert? People will say, man, it takes 15 years of experience. mm. Buddy, I want to become a entrepreneur in 30 years. Or by the time I attain the age of 30. I cannot wait till 50. So why should I take that much time in this industry and then reach that qualification? So it's kind of disrupting the traditional way of growth. See, we are living in an age where everybody wants to become entrepreneur. Let's say at the age of 7, 8 years itself. तो वो Yes. तो हाँ, तो उनको तो वो लगता होगा कि जो 37, 38 ईयर्स वाले वो लोग ज्ञान देते हैं कि बच्चे अभी पढ़ाई करो, ज्ञान करो। ऐसा नहीं। उनका जो Exactly. थॉट प्रोसेस है ना, उनका थॉट प्रोसेस होता है कि भैया हमको लर्न क्विकली करना है, फेल करना है, फिर लर्न करना है, फिर फेल करना है, फिर लर्न करना है, ठीक है? And तो उस एरिया में क्या एबिट करता है, क्या मदद करता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। absolutely, absolutely. And I also echo your thought because अभी क्या है ना, ये जितना इकोसिस्टम पूरा बिल्ड हो गया, पहले ये नहीं कर सकते थे, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था. एंड वेरी नाइस पॉइंट यू सेड, मैं उसमें थोड़ा ऐड करूंगा कि इन द सेम वे, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट आई वांटेड टू ब्रिंग इट हियर, इज दैट reverse engineering. So I learned low code first, learned the related technology and the domain where it can apply, and then I learned
that what is the logic going behind, what is the programming concept behind, right? So I literally Yeah, learn backward. If I yeah. okay, so it is a एंड लो massive. कोड भी लो कोड भी आपका लॉजिक बिल्डिंग प्रोसेस को कम नहीं करता है. फॉर नहीं एग्जांपल इवन करता इफ है। यू आर यूजिंग लो कोड प्लेटफॉर्म, देखो प्रोग्रामिंग का बेस क्या होता है. इफ यू कैन illustrate, if you can build a logic flow, जैसे मैं तुम्हें बोलूंगा देवसीज, तुम्हें जमशेदपुर से यूएस जाना है, ठीक है. हम्म। हम्म। तुम प्रोसेस बताओगे ना कि पहले क्या करना पड़ेगा. तुम बोलोगे हाँ जमशेदपुर चल जाना है, एयरपोर्ट जाइए, फ्लाइट लीजिए, हो गया. ये तो हो गया सिंपल डिफिनीशन. अब सिस्टम को तुमको बताना है कि क्या करना है, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन होगा कि पहले बैंक में चेक करो कि हमारे पास इतना पैसा है कि नहीं के है. तो उसको भी और सिंप्लीफाई करेगा. तुमको बोलना होगा कि नेट बैंकिंग खोलो, मेरे बैंक में जाओ, उसके सेविंग्स अकाउंट में जाओ, चेक करो पैसे कितने हैं. ठीक है. एग्जैक्टली। या। या फिर कोई एप्स में खोल के देखो, फिर उसके बाद बोलोगे कि तुम देखो टिकट का प्राइस कितना है यूएस जाने का. कंपेयर करो चीपेस्ट प्राइस क्या है. चीपेस्ट प्राइस समझ गए. चीपेस्ट प्राइस में देखो टाइम कितना लग रहा है. ये वेरिएबल तुमने समझ गए, उसके हिसाब से तुम बेस्ट क्लास टिकट दो. देखो उस दिन कोई और शेड्यूल तो नहीं है, वो मैप इट करो. फिर उसके बाद जिस दिन तुम्हें जाना हो उस दिन तुम्हारे पास टाइम से व्हीकल आ जाए, तो उसका प्लानिंग करो, कैसे करो, कहाँ से बुक होना चाहिए, किस टाइम पे तुम्हें व्हीकल जाए, किस टाइम पे तुमको एयरपोर्ट पहुंचना है, उसके अच्छा। एयरपोर्ट के अंदर के हम्म। प्रोसेस कैसे होगी, ये पूरा प्रोसेस बिल्ट हो जाना चाहिए, तब तुम यूएस रीच आउट करोगे. ठीक है. तो ये पूरा प्रोसेस लॉजिक जो तुम्हें बनाना है, ये लॉजिक बनने में टाइम लगता है. ठीक है. कोई भी बंदा एक दिन में प्रोग्रामर नहीं बन जाता, क्योंकि वो लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाता है. तो अगर आउट लो कोड पे मान लो वो काम करने लगे, तो उसका लॉजिक बिल्डिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी. जब वो काफी बढ़ बढ़ जाएगी जाएगी। लॉजिक बिल्डिंग कैपेबिलिटी, तो वो कोई भी प्रोग्रामिंग सीख सकता है. आई विल शेयर ए थॉट प्रोसेस ऑन दिस, मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ। जस्ट सिमिलरली वन मैंने मिनट क्या यार, किया अभी। सॉरी. या श्योर। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट. आई थिंक यू हैव कोल्ड, राइट? या बैंगलोर लिटिल को बिट. वेदर और व्हाट? और Yeah, यू आर Bangalore ट्रैवलिंग? weather is kind of Bangalore weather is kind of troubling. Yeah, every time you are down with some cold, you are worried that whether it's not COVID or what. But thankfully, it's nothing. It's just a normal cold, cough and cold. यस यस यस, पूरा चेंज हो रहा है अभी वेदर, तो उसी के वजह से एक पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा था व्हेन यू सेड ना, एकदम सेम ही अप्रोच से मैंने क्या किया। बीआई जो टूल्स है, ओके, तो एटलीस्ट Mm, बीआई में भी टिपिकली इट्स, आई कैन नॉट टेक इट लाइट एनी मोर, बिकॉज बीआई में भी आउटपुट जो होता है ना, डेटा को हम लोग बिगनर लेवल में अच्छा खासा क्रंच करते हैं, दैट इज व्हाट वी डू टुडे, ओके। तो एक एक वर्क फ्लो मेरे को पता नहीं था। आई एम ऑलवेज कीन टू डू एक्सरसाइज वर्कआउट विद डेटा, हाँ, बट मेरे mm, को बैकग्राउंड नहीं था। नाउ व्हेन आई इंटीग्रेटेड विद बीआई टूल, मैंने थोड़ा प्ले करा, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करा, mm, देन आई गॉट टू नो ओके द लाइफ साइकिल इज रियली रियली, और वो मेरे को पूरा दे दे रहा है, ओके विच काइंड ऑफ यहाँ से डेटा लो। अगर टिपिकली मैं mm, अगर प्रोग्राम भी करूँ, सेम लाइफ साइकिल आई फॉलो, राइट? मैं कहीं से डेटा लूंगा, उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, उसको लोड करूंगा, एंड इफ आई हैव टू ट्रांसफॉर्म, उसके लिए अलग मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, देन उसको विजुलाइज करूंगा, देन विजुलाइज के बाद उसको पब्लिश करूंगा। सो दिस mm, एंटायर स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट लोकल प्लेटफॉर्म मेरे को प्रोवाइड कर दे रहा। सो बाय दैट वे आई ऑब्जर्व दैट लाइफ साइकिल रिमेन सेम। द प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफ आई विल डू, आई विल फॉलो दैट सेम लाइफ साइकिल इन प्रोग्रामिंग ऑल्सो, बट येस इट विल बी एक्सटेंसिव इन डिटेल, क्योंकि कोडिंग अप्रोच अप्लाई होगा वहां पे, मॉड्यूल अप्लाई होगा, यहाँ वो बना हुआ है। तो मेरा जो लॉजिक है ना, वो तो क्लियर हो गया, लॉजिकल फ्लो मेरा क्लियर है। अब clear. प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आई नीड टू एक्सप्लोर एंड अप्लाई इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड इन अदर वे। So this is what I observe, and really, really like massive opportunity going forward in low code that I get to observe. And in the future session, I want that we bring more data. I wanted to discuss data driven. मैं भी सर्च कर रहा था, बहुत सारा इसके ऊपर है ऑलरेडी। फॉरेस्टर एंड देन गार्टनर, इनका जो भी आउटलाइन है ना, जो लोग देते हैं, सी वी विल नॉट गो इनटू डिटेल, बट व्हाट इज द रैशनल, अगर कोई फीचर्स हो रहा है दैट बिकॉज दीज आर द 5 key parameters are there in this tool and this is the rationale that ये tool better है, we can discuss that. And how critical, because to be honest, like मैं पहले सोचता था कि whatever insight is given, जरूरी नहीं कि वही इंसाइट के बेसिस में वो टूल मेरे लिए खराब है। आई मीन टू से, एक रैंकिंग मेरे को मिलता है फॉरेस्टर से, बट आई एम गेटिंग इट फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म एंड ऑल, एंड
वी नीड टू एक्सप्लोर फर्दर कि एज पर माई नीड वेयर दैट टूल स्टैंड, उसको अगर हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर पाए वुड बी रियली हेल्पफुल. एंड नॉट ओनली, ओके, दिस इज ए कंप्लीटली बिकॉज आई ऑब्जर्व देर आर मल्टीपल टूल्स, बट ये क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा पोलराइजेशन होता है कि देखो यही वाला टूल बेटर है, लोग उसके तरफ रुझान होना लगता है. बट देर इज अदर टूल्स ऑल्सो आई ऑब्जर्व सिमिलरली, एक आरपीएम में मैं बता सकता हूँ, और आपका बीआई टूल में बता सकता हूँ, डेटा माइनिंग में वैसे बहुत सारे टूल है जो उतना पॉपुलर नहीं है, बट द फीचर वाइज दे आर रियली रियली लाइक, फीचर वाइज, कॉस्टिंग वाइज, it's really, I wanted to bring those, hidden gem tools, okay, that I want to discuss. Not only that, I want to bring the open source as well. See, that is नहीं another. तो देखो, हाँ तो मेरा कहना है ना कि देखो, ट्राई टू विजुअलाइज एनी सोल्यूशन, टूल को इस वजह से मत देखो कि टूल मेरे को लर्न करना है. आई वुड Hmm. टेक यू टू द अर्लियर पॉइंट. आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या रिजॉल्व करना है हमको, और वो प्रॉब्लम को क्विकली कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. मतलब कि अब पहले जमाना होता था कि एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और उसका सॉल्यूशन पाने में मुझे सदियों लग गए. आई रिमेम्बर ए वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी कि एक बंदा जो नोबेल प्राइज जीता था, मतलब कि आफ्टर पीएचडी ही वाज गोइंग टू, he was delivering orders for McDonald. Okay. Mm-hmm. And while working in McDonald, in the age of 52, he solved a multi-generational mathematical problem. After that, 52. उसको Mm. mathematics Nobel Society में Nobel मिल गया, and he got very very famous. Okay. But he has Okay. to wait for 52 years to get that. Okay. Mm. My thing is that कि आज के डेट में लाइफ आपकी जितनी भी हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 40 हो, 50 हो, you should not go down away from the life that you have not done something significantly for yourself and for the society. So the thing is that I'm not saying कि low code is the solution. I am saying कि low code like things are kind of good In- approaches which can first of all democratize things, make it accessible to wider range of population, gets you good money, gets you good popularity so that you can rise in the ranks. And the third most important part is that it gives you enough time so that you can learn anything else. Okay. But low code is, of course, not the solution for everything. I'm trying to talk in a philosophical term. But the thing is that what I'm trying to imbibe in the audience is not that it's about all about the platform. It's not all about the platform. It's about the problem which it is solving. It's about the philosophy behind the development of this area. It's the philosophy behind the invention of this approach. So that's the beauty of any low code implementation. ये वाला बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला, बिकॉज सिमिलरली जो हैकाथॉन्स होता है ना, तो इसमें क्या करता है, Mm. प्लेटफॉर्म तो वही देता है लेकिन प्रॉब्लम भी देता है, लेकिन सेम प्रॉब्लम को पांच छह तरह से सॉल्व होता है, देन दे सरप्राइज द, अरे ये इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है. एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ, तो हमको मतलब क्रिएशन में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, रैदर वी आर इन्वेस्टिंग टाइम ऑन थिंकिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेवलपिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस इज Correct, वेयर इट हेल्प्स. correct. So that's the beauty of it. Hello, Devasis, I lost you. Devasis, Devasis, I lost you. Hello.